we have to talk about Dhurandhar 2. No. Dhurandhar is Mahabharat. Dhurandhar 2 or Toxic, which is your bet? I would like to believe. तो आप, मुझे अंदाजा है कि आप पत्ते नहीं खोलेंगे धुरंधर 2 में भी। मेरा ख्याल है उसके बारे में तो उज़ैर बलोच ही बता सकते। दानिश उसके बारे में सोचने में भी आपको अगर पूछेगा आप नहीं बताओगे। There's a world before Dhurandhar and there's a world after Dhurandhar. सबसे पहले गौरव गेरा इन धुरंधर जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। ऑलराइट, अक्षय खन्ना टेरर डरावना तो है, रहमान डकैत डरावना है। शोले को अगर कंपैरिजन किया जाए अगर धुरंधर का, तो मुझे लगता है कि आप तो है धुरंधर के। You know when the talks were coming out in the news, I mean like when it comes to Dhurandhar 2, I have no idea. मैंने तो इतने गाने लिखे ना। Aditya has claimed and said कि why did you tell everybody that there is going to be Dhurandhar 2 as well क्योंकि तब तक वो announce नहीं हुई थी. The idea is that he's always making two films in that one film, you know, and वो इतना ज़्यादा अच्छा लिखता है. पार्ट 2 में क्या आलम करने वाला है? यदि दूध सोडा बेचता रहूंगा। धुरंधर 2 will be a bigger box office success than धुरंधर। मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितना कमीना आपने मुझे देखा है उससे कहीं ज्यादा कमीना हूँ मैं आगे। दामाद बैठ गया लेकिन मैं अपनी कुर्सी तो नहीं जाने दूंगा ना। Hi, this is Ram Gopal Verma. Hi, I am Rakesh Bedi. Hi, my name is Danish. Hi, this is Jasmine Sandless. You're watching Memorable Conversations with Fardun Shariar. Since you're here and we have to talk about Dhurandhar 2, you feel that it's going to be one of the biggest multi-starrers ever. Why do you say that? Have you spoken to Aditya? And is that something that he has told you? Or? No, he didn't tell me. See, obviously, as the director is very confident. See, I'll tell you, my point is, if Dhurandhar is Mahabharat, I am presuming Dhurandhar 2 will be like a Kurukshetra. That will be climatic, like one climax where he has to probably put an end to all the characters which were introduced in Dhurandhar and their finishing, which happens in Kurukshetra, in Mahabharata. And to that extent, I instinctively feel the drama and the intensity of narrative and all that will be far superior in Dhurandhar. That is my presumption, you know. And second point, I feel before Dhurandhar, I do not believe there is a benchmark cinema. And why I'm saying that, you see, different kind of films work. I'm not saying no to that. But it's a template film. There is a hero, there is a heroine, there is a villain, there is a lofty cause, someone wanting to do something for the country. All that is a typical, all masala films have similar kind of lines, you know. But the way Aditya treated this in terms of the realism, in terms of the characters looking believable, and in fact, this is the only film I think Ranveer Singh doesn't have a slow motion shot. The hero, everybody else has. From Akshay to everyone else, you know. That's the opposite treatment to the South Indian. All South Indian pan-India biggies, all the time the heroes are walking in slow motion. Right. All the other characters are made to look like they're much lesser and their hero worshipping, including the villains sometimes. Here, in giving equal importance, and no one looks lesser than the other. All in their importance, they become the same, and almost like the hero is disappearing into the story rather than the story is being used to elevate the character. So this kind of a opposite treatment to what big commercial cinema is being treated in the last decade or so, I feel then this film getting these kind of numbers, one is only the numbers. Second is, I know a lot of people who are not from the film industry, they're talking about Dhurandhar's characters as if they know them. Rahman Dacoit was living here. I mean, they almost, if you go unexpectedly and you don't know if they're talking about a film, you will think they're talking about real people they know. That is the impact it created, which I don't think any film did in the last 25-30 years. The old kind of treatment of heroes walking in slow motion and for no reason the background music is thumping, back to back when they're experiencing that, even I am very curious to see how they'll react. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि उज़ैर बलोच का जो कैरेक्टर है धुरंधर 2 में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वो रियल लाइफ में भी अभी वो जिंदा भी हैं और जो स्कीम ऑफ इवेंट्स जिस तरीके से हुए रहमान डकैत के मौत के बाद, उसमें उज़ैर बलोच प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल व्हाटसोएवर। तो आप, मुझे अंदाज़ा है कि आप पत्ते नहीं खोलेंगे। बिल्कुल भी नहीं खोल सकता और खोलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि दैट उज़ैर बलोच का कैरेक्टर जो है वो धुरंधर 1 के कंपैरिजन में भी धुरंधर 2 में शायद और ज़्यादा स्क्रीन टाइम और उस मामले में मेरा ख्याल है उसके बारे में तो उज़ैर बलोच ही बता सकता है।
दानिश उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, टू बी रियली ऑनेस्ट। वो मेरा ख्याल है मार्च 19 को ही पता सवाल पूछने का अंदाज अच्छा था लेकिन सवाल पूछने का अंदाज बहुत अच्छा था लेकिन उसे मनूवर करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन बट द थिंग इज़, मैं उसके बारे में, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आई मीन इट्स नॉट अबाउट उज़ैर, बट apart from that also there are so many things happening in part 2 that I mean it's going to be much more humongous, I can say that। लेकिन जहाँ तक कि उज़ैर बलोच की बात है तो उसके बारे में दानिश तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल। या मार्च 19 को उसके बारे में पता चलेगा, एंड इवन आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज इन स्टोर। Right. Yeah. But you shot all your portions for the part 2? Yeah, we have shot the entire movie in 1.5 years. वो तो हमने ख़त्म कर लिया था। I think we started in July 2024 and we finished in October 2025. Okay, so पहला वर्जन जो है वो 3.5 घंटे का था, दूसरा वर्जन कितना, क्या ड्यूरेशन क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है उतना ही हो सकता है शायद, जितना मुझे लग रहा है, मेरे अंदाजे से मेरा ख्याल है कि 3-3.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन यू वोंट इवन गेट टू नो बिकॉज़ देयर आर सो मेनी। पहला पार्ट तो बुलेट की तरह गया। बुलेट की तरह गया। You know, I was, when the talks were coming out in the news, I mean, like, there are so many things revolving that, I mean, 3.5 घंटे की मूवी है, how it's going to sustain, will people be interested to watch it in the cinema hall and sitting for so long, and interval मिला के मेरा ख्याल है कि 4 घंटे की हो जाती है ना, क्योंकि 15-20 मिनट्स का interval भी हो जाता है। And I was like, because I had read the script and I couldn't say anything about it at that point of time, I was just saying कि मतलब just go and you'll get the experience. When it comes to धुरंधर 2, कितने गाने हैं धुरंधर 2 में जैस्मिन सैंडलर्स के? I have no idea. मैंने तो इतने गाने लिखे ना, hopefully एक तो होगा ही। I hope. Right. पता नहीं, हमने तो गाने बनाए थे 1-1.5 महीना। शाश्वत and I sat together. 2 projects were going side by side, Bads of Bollywood and धुरंधर। Bads of Bollywood में मेरा आशिकां दी रात बड़ी रंगीन आशिकां दी, है ना, और मैं रुसे न कर मेरे यार एक दिन सा रुक जाणगे, कदों चलना है तू मेरे नाल सफर जदा मुक जाणगे, मैं रुसे न कर मेरे यार एक दिन सा रुक जाणगे। I wrote these songs and I sang the Ashika song. Rusya Jubin sang because it was a scene where there are 2 friends that are boys and they wanted a boy to sing that song. So I wrote Rusya. It's one of my favorite songs ever. All the songs I write are based on true stories because I've felt it, I've lived it, and so it's very easy for me to write that song. But Kachi Kali, Sada Masoom Chehra, Niyat Nurani, Sada Dil Hai Sunehra, I just thought, okay, if I could make a sexy song that the world can dance to, but also have a little bit of grace and innocence in it. So I started the song with Kachi Kali, Sada Masoom Chehra. Okay, how do you make a sexy and seductive number still graceful? Let me sing it for you. Yes. तूने पर्दा उठाया, क्या बात हो गई है, ये मुलाकात वारदात हो गई। नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं, रात हुई फिर दिन, फिर से रात हो गई। वाह। कच्ची कली साडा, आ जाओ फिर, come on। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा,
ਕੱਚੀ ਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਨੀਅਤ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਫੀਮੀ ਮੈਂ ਚਸਕਾ ਚਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਲੜਾਵਾਂ फैंटास्टिक। वो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज धुरंधर में हर एक्टर जो है वो एक कैरेक्टर है। मतलब रणवीर भी जो है वो एक कैरेक्टर है, ही इज द हीरो, वो शुरू में स्टैब्लिश हो जाता है, बट द फैक्ट इज कि दैट अल्टीमेटली ही इज ए कैरेक्टर। सो चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, चाहे वो उजैर का कैरेक्टर हो, चाहे वो डांगा का जो कैरेक्टर है, चाहे वो अक्षय खन्ना है, चाहे वो सौम्या का कैरेक्टर है, चाहे रणवीर का कैरेक्टर है, सारा का है, राकेश बेदी साहब का है, दे आर लाइक कैरेक्टर्स, संजय दत्त साहब का है, दे आर लाइक कैरेक्टर्स एंड दे हैव बीन असाइंड अ सर्टेन रोल एंड वो अपने अपने तौर पे हीरोज के तरीके से ही प्रेजेंट किए गए, जो कि एक स्टीरियोटाइपिंग बहुत बार होती है सिनेमा में, वो स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करता है ये सिनेमा। हाँ, मुझे जैसे राकेश बेदी सर क्या कमाल किया उन्होंने, यू नो, आउट ऑफ एंड ऑल्सो एवरी कैरेक्टर आई थिंक छाप छोड़ के जाता है कि ये एक आई थिंक वाइज डिसीजन भी ऑफ द मेकर भी है कि आप अगर एक ही सेटअप को एक ही कैरेक्टर के साथ पूरा टाइम बैठे रहो, उससे बेटर है डिस्ट्रीब्यूट इट so that you know your likeness for every curiosity for every character remains और बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मुझे आई थिंक सारे के सारे कैरेक्टर्स छाप छोड़ने वाले हैं एंड याद रखेंगे शायद लोग एवरी कैरेक्टर को। बिल्कुल। ओके, अगर वन वर्ड में आप इन सारे एक्टर्स को अगर मुझे आप बता सकें कि दैट आपका क्या परसेप्शन है। सबसे पहले गौरव गेरा इन धुरंधर जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। राकेश बेदी साहब काइया ओके, यू अंडरस्टैंड काइया? हाँ, काइया ऑफ कोर्स, काइया गुन्ना भी बोलते हैं पंजाबी में, गुन्ने ओके। मतलब मन में कुछ और दिखाता कुछ और। अक्षय खन्ना टेरर, डरावना तो है, रहमान डे डरावना है। रणवीर सिंह आई डोंट नो, मुझे ना सुंदर आता है उसका कैरेक्टर, मुझे सुंदर लगता है, उसकी आंखें बोलती हैं। राइट। सारा अर्जुन बच्चा, प्यारा बच्चा, I think she's fantastic. She is exactly what the role needed and she's done it so beautifully and in real she's such a great girl. वो कमाल लड़की है। I wish her all the best. She's fantastic. संजय दत्त, उनके साथ मैं मिला नहीं हूँ but he's always been a rock star. मतलब एक अगेन हमारे सीन है but दूर है तो but he's a rock star. आदित्य धार, अभूतपूर्व, is that the right word? कि ऐसा पहले कभी नहीं है हुआ। This man is something else. ये ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। या फरीदुन, इनको ना शूट करते टाइम मैंने इतना काम देखा है, इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं आसपास, इतना बड़ा लियारी लगा हुआ है, and this man is calm and I tell him, I said I have seen a lot of people losing it, you know, blowing off their, दिमाग उनका हिला हुआ होता, मतलब घूम जाता है और चिल्ला रहे होते हैं and it's not calm at times sets. This man is suddenly on his phone, he's smiling, normally he's roaming around. मैंने पूछा भी, I said ये इतना काम कैसे हो सकता है? So he credits it to the team. He says I have a great team, I don't need to worry. ये अपने पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं and he is another level. ये अलग लीग है। That Aditya is the most fearless filmmaker I've worked with. I think he is one of the most talented writers that I have read, including all the other pros that I have read along the way in my life. Okay, sir, मैंने अभी रामगोपाल वर्मा साहब को मैंने इंटरव्यू किया था, उनका कहना ये है कि धुरंधर 2 will be. I saw that. Yeah. Okay. It was very nice, very refreshing. तो रामू जी ने कहा very honest interview by him. See, it takes a lot. Thank you. From a director to praise somebody else, some other director. It takes a lot. लोगों में इतनी हिम्मत होती है, वो नहीं पाती जी। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दैट धुरंधर 2 विल बी अ बिगर बॉक्स ऑफिस सक्सेस देन धुरंधर, और बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा होने वाली। आप डेफिनेटली आप धुरंधर 2 में भी आप नजर आएंगे। कुछ अगर आप बताना चाहें कि दैट ये जो उनका जो एक आकलन है, जो एनालिसिस है, किस हद तक सही लगता है? एक औरत का रिएक्शन बताता हूँ आप,
एक औरत जिसको मैं जानता हूं, उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं धुरंधर देख कर निकली हूं और मैंने 2-3 बार देख ली है, 3 बार देख ली है, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, आज सो जाऊं और मैं 19 मार्च को उठूं। क्या बात। मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये रिएक्शन बहुत लोगों का है और क्योंकि फिल्म, ये बिल्कुल फिल्म ऐसी है कि आपको हमने बहुत जबरदस्त कहानी सुनाई, बहुत कमाल की कहानी सुनाई, आपको एंगेज किया थ्रू आउट। हमने 3 घंटे एंगेज किया, हमने क्लाइमैक्स नहीं दिखाया। अब आपके मन में है यार, हे भगवान क्लाइमैक्स क्या है, क्या होगा, एंड में क्या होगा। तो हमने वो छोड़ दिया, मतलब आदित्य ने, द प्रोडक्शन, द डायरेक्शन, वो उन्होंने छोड़ दिया कि वो आप आगे देखिए। तो हर आदमी जानना चाहता है कि इसका रिजॉल्व क्या है, हाउ डज इट एंड। सो दैट इज द इंट्रीग विच दे हैव बीन एबल टू क्रिएट, जनरेट एंड एंगेज द ऑडियंस अप टू दैट लिमिट, यू नो। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि धुरंधर अभी जो चल रही है उसका हर सीन एंगेजिंग है और उसमें कहीं भी कोई आप जो कहते हैं कि कमर्शियल जो एक टेंजेंट्स होते हैं कहानी को हिट करने के, जो फॉर्मूलाज होते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कुछ गाने डाल दो, कुछ सेक्सी सीन डाल दो, हीरो हीरोइन का डांस डाल दो विद सो मेनी डांसर्स डांसिंग बिहाइंड, कहीं पहाड़ों में कहीं डाल दो। ये बहुत सारे वेरिएंट होते हैं और बहुत सारे ये मैं बता रहा हूं कि एक क्या कहूं मैं, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं आ रहा, वो एक ट्रैप होता है जिसमें अक्सर डायरेक्टर लोग फंस जाते हैं कि नहीं यार ये हम डाल देते हैं, इसमें कोई रिलीफ ही नहीं है, पिक्चर इतनी टेंस है तो 2 गाने डाल दो, एक्स्ट्रा 2 सीन डाल दो कॉमेडी के, तो राकेश बेदी कॉमेडियन है तो उससे ये भी करवा लो एक एक्स्ट्रा सीन, बिकॉज कहानी बहुत टेंस चल रही है। तो कहीं भी आप देखिए डिविएट नहीं होती है कहानी, कहीं डिविएट नहीं, और आपको प्रॉपर एंगेज करके रखती है। तो विच इज द रीजन व्हाई इट टेक्स यू टू अ पॉइंट, आई विल से टू द क्लिफ, ओनली द जंप इज लेफ्ट नाउ। तो राकेश जी आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं आपने, लेकिन ये जवाब एकदम बिल्कुल पॉलिटिशियंस वाला दिया है, आपने कुछ बताया नहीं। मैं बताऊंगा भी नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि क्या है, एक तो बताना बनता भी नहीं है मेरा, और पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जितना कमीना आपने मुझे देखा है उससे कहीं ज्यादा कमीना हूं मैं आगे। हाँ, ये एटलीस्ट दैट इज so you're having a substantial part of obviously in second part as well. अब देखिए कहानी हमने जहां छोड़ी है कि मैंने अपने ही दामाद को अपने ही किंगडम का एक टॉप बना दिया है, टॉप पे बिठा दिया है, and it starts, मतलब I get. Okay, so last time when we spoke, you said that it's going to impact all the movies that are being made, especially in South, with all the villain just hitting the ground and just pumping up whatsoever. Correct. And right after that came Raja Saab. Yes. And just flopped miserably whatsoever. So, do you think that your point was vindicated in a way? And was Dhurandhar's way was responsible in a way? Raja Saab is a right example because one is it is come like a fantasy horror comedy or something. I think. I'm talking about the action. Yeah, I mean, I haven't seen the film, but I would like to believe. See, if you look at a KGF 2, you look at a Pushpa 2, you look at a Salar. Now, these films have similar kind of a template. That is very different from Raja Saab as a genre. So, I would like to believe Toxic could be the right comparison. Because Toxic still is in the taking forward in the same what is already being accepted for the last 10 years of the superhero and slow motion walking and the like saying dialogue with swag and all that, which is not what Dhurandhar is. So back to back, that becomes a very interesting comparison to watch. Pushpa 2 came 1 week after Dhurandhar. I'm very keen to know what would have happened. See, Pushpa 2 is a big hit. Everybody knows it. Bunny is fantastic, all that.
But after seeing the realistic action of Dhurandhar, you know, and I don't think I was seen action like in Dhurandhar in my career. Now, if you suddenly see a guy almost flying around, biting people and all that, would they be able to enjoy it the same, or will they like this more than Dhurandhar? That for me is interesting thing, because that is the reason I'm going on saying Dhurandhar is the first film which created a benchmark. See, it's like Hollywood film actually. It is not like a. I can't remember a single film I saw which will be in the same meter like Dhurandhar. Right, Dhurandhar 2 or Toxic, which is your bet? What are you betting on? Because Toxic, the teaser has got a great response. Yeah. What I am interested in seeing, extremely realistic and believable characters, and the story being so immersive, and the crafting of the director versus like what I explained, like in slow motion, people were jumping and this and that, and nothing looks real, which is a fantasy world. Many of those films work. I'm not saying no to that. But seeing them back to back, I'm really curious to see how the audience will react. So what is your opinion on Toxic teaser? What is your opinion on Toxic teaser? See, I am not a fan of that kind of cinema. So I don't want to say specifically about Toxic. I mean, that artificial heroism, which masses like, they always like. They have 300, 400 crore numbers and all that. I am not a fan of that kind of cinema. I don't mean specifically Toxic. But the sort of scene that is there with that Yash is having with the girl, for example, and the sort of debates that are going on around that, that has definitely created a lot of curiosity around the film. Yeah, correct. And it is definitely unusual. It is not. It is a huge risk-taking ability which is there, and the producer is a woman. See, now, what I'm trying to say, see my point, but I want to, on the outset, give a disclaimer. I am not wanting to comment on Toxic. I'm commenting on the unit. There are two units here. One is a guy is having sex with a girl in the car, and then he comes out in slow motion, and then he shoots, and without having any kind of a tension or whatever, because you have to assume that he's a superhero, no bullet will hit him. Correct. And he's so casual about the whole thing, which makes actually shoe look lesser. So this is what is called a hero worship template. Versus in Dhurandhar, the tension and the danger what the hero is feeling. And when he lands in Pakistan, he's being beaten up badly, where his teeth are shattered and all that. And all the time he's waiting for his time and laying in the background. Now, that kind of a realism versus this kind of a boosted artificial heroism, there are two different templates, not necessarily only this. If you make a film like that, and if you make a film like this, which one will affect is something. Both can work. I'm not saying this won't work but the impact which Dhurandhar had, I feel even the film industry is not really realizing. They're looking at the numbers, they're talking about how much it collected and all that, but actual how much it impacted the common man sitting in the theater, I feel they're not aware of it. They're still not aware of it. They're still not aware of it. I had Danish, the guy who played Uzair Baloch in the morning, and he's a huge fan of yours. And the sort of impact I think almost every character has had in the movie is truly remarkable. Yeah. As you yourself said, for example, not Babu really. Decade is there maybe for 15-20 minutes. And you want to meet him? I just can't forget. You want to meet it. the actor? Huh? You want to meet that actor? I talked to him on the phone. You did? Yeah. What did you talk to him about? I wanted to cast him in something, and when I contacted him, he sent me this smiley emojis. I was shocked. But I was thinking, Babu Decade sent smiley emojis. What's happening? That was one of my biggest shocks. I know I'm a filmmaker. I know there's an actor, there's a character. In spite of that, because of the impact he created on screen, I felt that. Now, with Toxic and Dhurandhar 2 coming together, I personally feel that both the films, they are very strong. Do you feel that for an event occasion like this, the country needs more screens? Because there's a market for both the films. But maybe, are there enough screens? See, I'm really not so much into the trade aspect of it. I don't have the knowledge, neither the interest to understand that. Eventually, it's about the dynamics. I mean, when there is a market, there are enough people. I think this will be best known to the so-called distributors and exhibitors and theatre chains. You know, and if this happens once in a
Blue Moon. Big films like Dhurandhar 2 and Toxic coming on the same day. How many times it will happen? And if you're going to amp up the screens for that, what do you do when they're not there? Yeah, of course. But I think they will understand those dynamics more.